And if you have such a situation, and also besides being you being a harmonic on this d plus, uz uh, goes to 0 as z from d plus tends to any point in this real line in this segment. Then reflection principle says that this function can be extended to be harmonic on whole of the domain D, and that means you are able to extend or reflect this function to this reflected part as well, and it can be reflected to this part as well. And when you define you extend this function to be harmonic on whole of the domain D, and then it satisfies this inequality equality also. So this was about the harmonic principle. Harmonic functions. We have a reflection principle. We will use this reflection principle for harmonic functions to prove a reflection principle, which was reflection principle for analytic functions. And we have the same kind of setup. We have a symmetric domain. Let D be a symmetric domain with respect to the real axis, and let us take f to be an analytic function. F be an analytic function, and it is analytic function on this d plus part, and you know this d plus part is the part of this uh, it is the part of domain where imaginary part is greater than 0. And further, suppose that the imaginary part of this function fz tends to 0 whenever the points from this d plus part tend to any point in the segment part, real segment part in the domain D. So with this kind of setting, then we have that then this function f can be extended to be analytic on whole of the domain D. Analytic on D, and the extension will satisfy the following identity. In the extension satisfies the identity fz conjugate equals to conjugate of fz. So this is a reflection principle for symmetric domains with respect to the real axis. You see, you have an analytic function on a domain on exactly half of the domain. Indeed, you might take disk as well. Disk is also a symmetric with center at the real axis. You have a function which is defined only on half of this domain. And the property of the domain of being a symmetric, and this property helps us to extend this function uh, to be analytic on whole of the domain D. It helps us to extend this function to be analytic on whole of the domain D, and this extension, once defined, has this function, this beautiful property, beautiful identity, where image of conjugate comes out to be a conjugate of image. And this is very rare. I don't think that there are many functions, and the noun functions, they don't satisfy this kind of inequality, equal identity.
So let's begin. Let's try to see how it works, how it happens. So for proof, let us write f as its real part and imaginary part, and then we know that since f being an analytic, at the beginning the function is defined only on d plus, and since it is analytic, so u and v are harmonic functions. And by the way, it is given to us that imaginary part of fz tends to 0. So that is to say that v z tends to 0 as z from this part of the domain d plus tends to some point, to any point in the real segment in d. So we have the hypothesis of Shiva's reflection principle for harmonic functions being satisfied by v. So by Shiva's reflection principle for harmonic functions, Shiva's reflection principle, harmonic functions, v extends to be harmonic on whole of domain D and also satisfies the identity, satisfies that Vz conjugate is equal to minus of Vz for every Z in D. So we have this thing, V is a harmonic function, and according to the ensuing hypothesis on F, so we get the hypothesis of Shiva's reflection principle for harmonic functions on V, and we extend V to be harmonic on whole of the domain D. Now we have, let's take this to be some domain. Okay. Now let's first look at the behavior for some point, fix some point in this segment. So I'm taking only x naught because on real axis it will not have any imaginary part. And then since it's a part of the domain, so I can draw a disk being an open set. I can draw a disk around this point of some radius so that the disk lies within the domain D. So now, and let this be a disk around this point in domain D. Now see, disk is a simply connected domain, and we see that V is a function which is harmonic on whole of the domain D, so it's harmonic on this disk D also. So let us write in this way: is simply connected domain. It is a simple disk is always a simply connected domain, and we know that a harmonic function has a harmonic conjugate on a simply connected domain. So V is a harmonic function now on this disk, and so V has a harmonic conjugate. Let that conjugate be H, but this is a harmonic conjugate on Tx naught R. So this we got a function, another function which is harmonic on this disk, and that is a harmonic conjugate of V. That is, then when it is a harmonic conjugate of V, means that V plus IH is analytic, on this disk. And not only this function is analytic, if I multiply this function with minus I, not with, yeah, I only, let me multiply this function with I. And if you multiply an analytic function with any constant, the function still remains to be analytic.
and then this function becomes v I minus h, or you may write it as minus h plus iv, and let this function be denoted by g. So this function is also analytic on the disk, analytic on this given disk. So we have, I have to redraw again and again things. We have a disk. Now on this part of the disk, which lies in D plus, F is there. F is analytic on this part. Here F is defined on this part. We do not know whether F is defined on the lower part of this disk or not, but for sure it is defined on this upper part. And actually we have two functions, F and G now on this part. G is analytic on whole of the disk, but F and G both are defined on this upper part of the disk. Now look at this imaginary part of F. F is U. Imaginary part of F is V, is equal to V is imaginary part of G on this plus part of this disk. And you see this upper semicircular region of this disk is an open set, is a domain indeed. And you have a function, you have two analytic functions whose imaginary parts are equal, and it's a simple exercise that whenever there are two analytic functions, and so that they have imaginary parts same. For example, we have f is equal to u plus iv, and we have g is equal to h plus iv, then f and g are both analytic functions, and so their sum is also analytic, or their difference is also analytic. F minus g is also analytic. F minus g is u plus h, and we will cancel the f minus g is analytic, but you see f minus g is now purely a real valued analytic function. And what we know about such analytic functions are always constant function. So this implies that this is a constant function. This is a constant function, but this being a constant function, will you give that it's constant? Is a constant function. So you will have what f you will have then u is equal to minus h plus some constant, and we can again take this minus since minus h is a conjugate of v, and minus h v is a my h plus c is again a conjugate, because adding constant to a conjugate doesn't affect it, remains a conjugate. So we may again take it as minus h. So that will imply that u, if they have the real parts equal, their imaginary parts are also equal. So this will imply then that hence this will, if their imaginary parts were equal, their real parts are also same. And if both the functions have real and imaginary parts same, that means function f is equal to g on this part of x naught r. So we have this thing. Is it okay? Yes, sir. So we have this also, and also at the same time we have u to be equal to minus h, and it is equal to d plus x naught r. Now, but h is defined on whole of the disk. So h is defined on whole of the disk, and on this upper part u and h are same, minus h are same. So h is a harmonic function. So we may take u to be so what to say now, we can say this in this way. Okay, h is defined on whole of this disk,
and u is defined on the only this upper, just u is defined on this plus part, and what we have that u is equal to h on this upper part, and h, so in this way h, u can be extended to be harmonic on this lower part of this disk as well. So this uh, way u extends to be harmonic on whole of the disk dx naught r. Is it okay? आप क्या करेंगे? What you have to do, you have to just redefine u. u को पूरे पूरे आपने डिस्क पे कैसे डिफाइन करना है? You have to define पूरे डिस्क पे अगर कोई भी पॉइंट ले लोगे तो uz has to be you just keep it uz. अगर आपके पास z is in the upper part of this disk and you take it to be minus of hz if z is in the lower, then you see that this function is actually nothing but this is minus h of z, and minus h is harmonic function, and so u is a harmonic function on whole of the disk d. So hence that means what it means, that means uh, fz extends to be NLT, क्योंकि v तो ऑलरेडी एक्सटेंड हो गया, v ऑलरेडी एक्सटेंड हो गया v उसके ऊपर, तो u भी एक्सटेंड हो गया, v तो ऑलरेडी एक्सटेंड किया था हमने पूरे डोमेन पे, v तो पूरे नीचे वाले t d माइनस पे भी एक्सटेंड है, तो अब आपके पास u भी एक्सटेंड हो गया, और v और u का रिलेशन क्या आपस में, दे आर हार्मोनिक कंजुगेट ऑफ, v इज हार्मोनिक कंजुगेट ऑफ u, तो हेंस f एक्सटेंड्स टू बी analytic on whole of the disk dx not r. How you define, what you will do, अब f को पूरे डिस्क पे डिफाइन करना आपने, क्योंकि f अपर पार्ट में डिफाइंड है ऑलरेडी, तो fz को आप क्या रखेंगे, fz को आप fz ही रखेगा व्हेन एवर z इज इन d प्लस, तो लोअर पार्ट में आपके पास जो एक्सटेंडेड u और v मिलते हैं, तो यू जस्ट गिव इट दैट वैल्यू एक्सटेंडेड u और z, तो ये एक दूसरे का हार्मोनिक कंजुगेट है, तो इन दिस वे इट बिकम्स अ एनालिटिक फंक्शन. So this means that fz extends to be analytic function on whole of the disk. ठीक है जी, अभी तक आपके पास f क्या था, f आपके पास एनालिटिक फंक्शन था, बट f आपके पास एनालिटिक फंक्शन था सिर्फ और सिर्फ इस d प्लस में. फिर आपने क्या किया, what we did, we constructed a disk with center as a real number. Then what we have now, we have this thing that f has extended itself to be analytic not only अपनी beyond its limits, beyond its boundary, ये lower part में इतने से part पे extend हो गया analytic function. ठीक है जी, तो सिर्फ इतने पे नहीं, इस तरह से आप क्या करेंगे, आप कोई भी आप इस डिस्क ड्रा करते जाएंगे, जितनी भी आप डिस्क ड्रा कर सकते हैं, पॉइंट्स का जो सेंटर उन डिस्क का रहेगा, आप रियल एक्सेस पे रखिएगा, तो इस तरह से आप सारी डिस्क आप ड्रा कर लीजिएगा, तो फाइनाइटली मेनी डिस्क इंडीड आपके पास होंगी, जो ये डिपेंड करेगा कितनी भी डिस्क हैं, तो इस तरह से आपके पास इस सारे बिलो पार्ट में जो आपके पास है एफ एक्सटेंड होता जाएगा, और एफ वहां भी एक्सटेंड होगा, और एफ सिर्फ वहां एक्सटेंड नहीं होगा, एफ इस रियल एक्सेस पे भी डिफाइन होता जाएगा, एफ इस पूरे रियल एक्सेस पे भी एक्सटेंड होता जाएगा. ठीक है, इस तरह से दिस इज अ प्रोसेस दैट विल कीप गोइंग. Now let us argue in now come to for the completeness, let's argue in this way that since, oh, let me change the color, since this function fz conjugate का whole conjugate, we know that ये function हमेशा analytic होता है, but this is analytic on always disk या symmetric domain पे in general, so this function is analytic on this disk, and what relation we have this function का fz conjugate
को आप लिख सकते हो ना u z कंजुगेट प्लस i टाइम्स v z कंजुगेट। ओके, तो बट v की जो एक्सटेंशन है, v की एक्सटेंशन कैसे आपने डिफाइन करी है? v की एक्सटेंशन कैसे डिफाइन करी है? v की एक्सटेंशन सेटिस्फाइज दिस थिंग माइनस i v z। ठीक है, नाउ इफ z lies on real axis, if it lies on real axis, तो उस वक्त आपके पास z कंजुगेट इक्वल टू z होगा, so that f z कंजुगेट का whole conjugate will be f z whole conjugate, and this will be u z minus I v z whole conjugate is nothing but it is u z plus I times v z. This is equal to f of z. So these are two analytic functions, and they are same on this segment. They are same on this segment. And you know, this is a segment. This is a segment which has no isolated points. No isolated point lies in, because किसी भी segment का कोई भी isolated point नहीं होता है real segment का। ठीक है, ये कोई भी इतना सा पार्ट आपके पास है, ये इतनी सी लाइन सेगमेंट है, तो इसके ऊपर कोई भी आइसोलेटेड पॉइंट नहीं है। तो दीज आर टू एनालिटिक फंक्शंस व्हिच एग्री ऑन दिस पार्ट, ये डिस्क का जितना भी पार्ट है, तो दोनों फंक्शंस पूरे, ये फंक्शन इस पे एनालिटिक है। ठीक है, तो एफ जेड यहाँ तक एक्सटेंड हो गया है। ठीक है, तो एफ भी और एफ जेड और एफ जेड कंजुगेट का होल कंजुगेट, ये दोनों के दोनों फंक्शंस पूरी डिस्क पे डिफाइंड है। तो ये दो फंक्शन इस एक ऐसे सेट पे एग्री कर रहे हैं जिसका कोई भी आपके पास लिमिट पॉइंट, ये सॉरी आइसोलेटेड पॉइंट नहीं है, दे हैव ओनली नॉन आइसोलेटेड पॉइंट्स। सो वी कैन यूज नाउ द यूनिकनेस प्रिंसिपल, एंड बाय यूनिकनेस प्रिंसिपल इट फॉलोज दैट, ये आइडेंटिटी थ्योरम जिस नाम से भी आप जानते हैं उसको, बाय यूनिकनेस प्रिंसिपल it follows that this function f z conjugate whole conjugate is equal to f of z for each z in this disk dx naught r. Okay, this is the, and so ये आइडेंटिटी आपके पास। नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू extend f to the lower part of the domain d minus by setting f of z to be f z conjugate whole conjugate for z in this lower part। इसको ऊपर वाले पे तो ये डिफाइंड है, नीचे वाले पे भी, तो इंडीड पूरे डोमेन पे इसको इस तरीके से हम, लोअर पार्ट पे इस तरीके से हम इसको डिफाइन करते हैं। देन एज सीन अबव, वी कंटिन्यू करते जाएंगे, देन द एक्सटेंडेड फंक्शन, क्योंकि f एनालिटिक है तो वी नो दैट उसके रिफ्लेक्टेड डोमेन पे f z कंजुगेट का होल कंजुगेट इज गोइंग टू बी एनालिटिक, is analytic on d bar, and ये वाली जो इक्वेशन है, लेट मी दिस इक्वेशन कॉल इक्वेशन स्टार, इस इक्वेशन से हमें पता चल जाता है कि and on d star and coincides with analytic continuation of f across this segment dr, जैसे पीछे हमने देखा कि ये इट विल एग्री ऑन दिस पार्ट। छोटी छोटी डिस्क्स पे करेंगे, लेकिन जब आप छोटी छोटी डिस्क्स पे आप करते जाएंगे तो इस तरह से, जैसे ये पीछे यू कैन सी दिस डायग्राम, we will be able to extend this f to whole of this line segment, and इस पूरे लाइन सेगमेंट पे आपके पास एफ जेड और एफ जेड होल कंजुगेट इक्वल हो जाएंगे। तो another application of
what you say, uniqueness principle will imply that these two functions agree on whole of the domain T. So agrees on this, and hence by what you say, uniqueness principle, we see that fz is equal to r. Yeah, that's just to say that they agree on this part, and hence by uniqueness principle we see that these two functions agree on whole of the domain T, and this function in this way extends to be analytic on whole of the domain T. Is it okay? So let me repeat once again the basic idea. What we are doing. We have a symmetric domain with respect to real axis, and on this symmetric domain, we on this upper part, which is D plus, we have an analytic function UIV, and on this real axis, that is the real axis part in this domain D, V tends to be 0 there. Whenever Z approaches to this real axis, V tends to be 0. And then the Shiva's reflection principle for harmonic function helps us to Shiva's reflection principle for harmonic functions helps us to extends V to whole of the domain D. तो इस तरह से V पूरा extend हो जाता है डोमेन D पे, ठीक है? तो अब V आपके पास पूरे डोमेन D पर डिफाइन है, then what you do, आप F को एक्सटेंड करते हैं, लेकिन F को पहले लोकली एक्सटेंड करते हैं. लोकली मीन्स आप पहले एक्स एक्सेस पे रियल एक्सेस पे एक डिस्क ले लेते हैं किसी भी पॉइंट पे, सो दैट वो डिस्क डोमेन के अंदर है. इस तरह की डिस्क को चूज करना ऑलवेज पॉसिबल है क्योंकि डोमेन ओपन है. तो देन व्हाट यू डू, डिस्क बीइंग अ सिंपली कनेक्टेड डोमेन, आपके पास V का हार्मोनिक कंजुगेट मिलता है एक, यू गेट अ हार्मोनिक, क्योंकि V पूरे डिस्क पे डिफाइंड है, तो V का एक हार्मोनिक कंजुगेट मिलता है. यू गेट हार्मोनिक कंजुगेट, we get harmonic conjugate of V, and so that आपके पास V plus IH पूरे का पूरा जो होता है एनालिटिक हो जाता है इस पूरी डिस्क पे. तो नॉट ओनली ये एनालिटिक हो जाता है, अगर आप इसको I से मल्टीप्लाई करें तो माइनस H प्लस IV भी एनालिटिक हो जाता है. तो देन वी सी दैट कि ये जो फंक्शन है माइनस H प्लस IV और F ऑलरेडी आपके पास है U प्लस IV, तो इन दोनों फंक्शंस के इमेजिनरी पार्ट्स इक्वल हैं. तो जब दो फंक्शंस के इमेजिनरी पार्ट्स हैं तो रियल पार्ट्स भी आप इक्वेट कर सकते हैं. वहां से आपके पास u इक्वल टू माइनस एच बन जाता है, बट नॉट ऑन होल ऑफ द डिस्क, बट डिस्क के अपर वाले पार्ट में, क्योंकि u अभी अपर वाले पार्ट पे ही डिफाइंड है. तो जब h पूरे पे डिफाइंड है तो अपर वाले पार्ट पे आपके पास u डिफाइंड है. तो h इस तरह से इट एक्सटेंड्स, इस इक्वेशन से यू आर एबल टू एक्सटेंड u टू होल ऑफ द डिस्क. तो जब U पूरे डिस्क पे एक्सटेंड हो जाता है तो आपके पास F की एक्सटेंशन मिल जाती है आपको पूरे के पूरी डिस्क पे, सो दैट एक छोटे से पार्ट ऑफ D माइनस लोअर वाले पार्ट पे आपका F एक्सटेंड हो जाता है. तो इस तरह से उस पे एक्सटेंड हो जाता है. इन पर्टिकुलर आपके पास F इस रियल एक्सिस पे भी एक्सटेंड हो जाता है. तो इस तरह से रियल एक्सिस पे आप एक्सटेंड करते जाइएगा, एक और डिस्क पे एक्सटेंड कर लीजिएगा. तो जब आप F को एक्सटेंड करेंगे एक और डिस्क पे, और इन दोनों डिस्क का आपस में कुछ इंटरसेक्शन पार्ट होगा, यू विल हैव समथिंग, इस तरह से कोई डिस्क ड्रा कर लीजिएगा. तो ये इंटरसेक्शन वाले पार्ट पे जब नई एक्सटेंशन मिलेगी तो उस इंटरसेक्शन वाले पार्ट पे वो इंटरसेक्शन कॉमन होगी जी. तो फिर से यूनिकनेस प्रिंसिपल से वो जो एक्सटेंशन होगी, जो डिस्क, ये डिस्क D1 है, ये डिस्क आपके पास D2 है, तो D1 पे जो एक्सटेंशन होगी वही एक्सटेंड हो जाएगी D2 पे भी. तो दैट मीन्स रियल एक्सेस पे जो है एक्सटेंशन, जिसको मैं एनालिटिक कंटिन्यूएशन बोल रहा हूँ, तो रियल एक्सेस पे वो फंक्शन एक्सटेंड होता जाएगा ऐसे से. इस तरह से हर एक डिस्क पे आपके पास ये पॉसिबिलिटी होती जाएगी. इस तरह से यू विल बी एबल टू F को साथ में ही यू विल बी एबल टू एक्सटेंड F टू होल ऑफ दिस सेगमेंट, रियल सेगमेंट, जो भी आपके पास रियल सेगमेंट डोमेन के पास है. तो एक्सटेंशन मिल जाएगी, और
फिर आपके पास क्या होगा, आप एक फंक्शन एफ को आप पूरे डोमेन में, नीचे वाले डोमेन पे भी एक्सटेंड करना है, तो आप इस तरीके से फंक्शन डिफाइन करते हैं। तो ये एक जनरल स्टैंडर्ड रिजल्ट है जो आपके प्रीवियस सेमेस्टर में आपने देखा होगा कि अगर एफ एनालिटिक है, इफ एफ इज एनालिटिक ऑन डी, तो देन एफ जेड कंजुगेट होल कंजुगेट इज एनालिटिक ऑन इट्स रिफ्लेक्टेड डोमेन होता है। तो डी प्लस का रिफ्लेक्टेड डोमेन डी माइनस है, तो इस तरह से ये फंक्शन एनालिटिक हो जाता है। दिस इज एनालिटिक ऑन डी माइनस। तो डी प्लस पे भी ऑलरेडी एफ एनालिटिक है, डी माइनस पे। तो रियल एक्सेस पे देखा हमने, तो रियल एक्सेस पे जो एफ आपके पास एफ ऊपर डिफाइन है, तो ये जो एफ आपके पास या एफ जेड कंजुगेट जो है, एफ ये जो न्यू फंक्शन आपने एक्सटेंशन है, तो एफ की जो एनालिटिक कंटिन्यूएशन है इस रियल एक्सेस पे हो रही, तो उसके साथ ये एग्री करता है। तो दैट मीन्स ये पूरे के पूरे डोमेन पे इस तरह से आपके पास फंक्शन एनालिटिक हो जाता है जी। सो दिस इज अ प्रोसेस, आप इस तरह से ओवरव्यू भी इसका दिमाग में रखिएगा, देन इट्स ओके। ठीक है, तो आपके वो जो आइडेंटिटी की बात करी है, तो आइडेंटिटी क्योंकि फंक्शन हमने डिफाइन ही इस तरीके से किया है, तो आइडेंटिटी वैसे ही सेटिस्फाई करेगा। तो आपको कंजुगेट लेफ्ट हैंड साइड कंजुगेट एक बार कर लीजिएगा, यू विल गेट एफ जेड होल कंजुगेट इक्वल टू एफ ऑफ जेड कंजुगेट। इज इट ओके? Is it clear? Or you have any query, any doubt? Will somebody respond, or you are in hibernation somewhere?